Hello and welcome to the YouTube channel of Vidhi Culture. Today we are here with another session of the DU LL.B previous year paper discussion, and this is the third part in this session. So today we will discuss the questions from the previous year paper of 2021 from DU LL.B entrance examinations. We have already done certain questions from the previous year questions, and today we are here with few more questions. So let's start. Yes, so the very first question is the principle and the fact question. So just read this question. So the legal principle here says any contract made for an unlawful consideration is void in law. कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए बनाया जाता है, अनलॉफुल कंसिडरेशन के साथ बनाया जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो void कहलाएगा कानून के अंतर्गत. This is the principle. Now coming to the facts of this question, that is Mr. X agrees to pay ₹1000 to Mr. Z for giving false evidence in the court. X जो है वो Z से ये agreement करता है, ये agree करता है कि I will give you ₹1000 if you will give false evidence in the court. तो एक गलत काम करने के लिए इसको यहाँ पे कहा जा रहा है, unlawful काम करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है. So now the question says choose the correct answer from the options given below. So the first option is the contract is voidable at the option of Mr. Z due to the risk involved in it. कहता है कि ये जो है ये voidable है at the instance of Mr. Z because यहाँ पे risk involved है, तो फिर भाई Z जो है वो चाहे तो उसे void करार कर सकता है या फिर चाहे तो उस option के साथ जा सकता है. Then the second is the contract is void ड्यू टू अनलॉफुल कंसिडरेशन. दूसरा ऑप्शन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है क्योंकि यहाँ पर अनलॉफुल कंसिडरेशन हुआ है. देन द थर्ड वन इज द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड मिस्टर जेड मस्ट परफॉर्म इट. तीसरा ऑप्शन कहता है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और जो मिस्टर जेड है उसको इसे परफॉर्म करना चाहिए. Then the fourth option, the contract is voidable at the option of Mr. X. कहता है जो Mr. X है उसके option पे ये जो contract है ये voidable है. So these are the options given under this particular question. So taking into consideration the legal principle and the fact of this question, the right answer of this question is option number 2. Option number 2 is the right answer of this particular question, which says that contract is void due to unlawful consideration, because the purpose itself is and the consideration given here is absolutely unlawful in nature, so it will be a void contract. Now moving on to the next question, that is question number 2. So in this question it is given the active concealment of the facts while entering into a contract is considered. कि भाई अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करते समय, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय, इफ देयर इज एनी कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स को छुपाया जाता है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे. सो द ऑप्शंस आर मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और coercion. So what can be the right answer from this? What can be the right answer here? So the right answer is fraud. Third one is the right answer, that is the fraud. Active concealment of facts while entering into a contract is considered a fraud. Moving on to the next question, that is question number 3. And what does it say? It says that Mr. X entered into contract with A to deliver 10 kgs of mango to Mr. A on 20th July. यहाँ पे कहता है कि X ने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया A के साथ कि भाई टू डिलीवर, एक डिलीवर करने के लिए क्या चीज, 10 किलो आम जो है वो डिलीवर किए जाएंगे टू मिस्टर ए, मिस्टर ए को डिलीवर किए जाएंगे 20 जुलाई को. और फिर ऑन 18th जुलाई, 20 जुलाई से पहले ही मिस्टर एक्स रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ पे जो है इन्होंने, मिस्टर एक्स ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से, परफॉर्म करने से यहाँ पे 18th को ही मना कर दिया. दिस इज एन इंस्टांस ऑफ, ये क्या है, किस तरीके का इंस्टांस है, यू हैव टू आंसर हियर इन दिस क्वेश्चन. सो द ऑप्शंस आर अबेंडमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट or remission of contract, breach of contract, or anticipatory breach of contract. So if you look at the options, then we can say that
fourth is the right answer here, that is anticipatory breach of contract. Why anticipatory? Because the it was about to be delivered on 20th, but the the contract he refused to perform the contract on the 18th itself. ठीक है, अगर पहले ही हो गया, that is why we call it anticipatory breach of contract. So option number 4 is the right answer here. Now moving on to the next question, that is question number 4. It says the subsequent changes made in the nature of contract is known as, the subsequent changes, जो बाद में changes कर दिए जाते हैं nature of contract में, contract के nature में, उसको हम क्या कहेंगे? Whether it is novation, alteration, rescission or repudiation, what is it? क्या है ये? So one by one, first we will see what is the meaning of all these options. So if we look at the meaning of these, so if you look at the novation, what does it mean? Novation is nothing but the substitution, the substitution of a new contract in place of an old one. ठीक है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह अगर हम नया जो है कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं नोवेशन. नाउ what is the meaning of alteration? So alteration is nothing but changing the terms and condition, changing certain terms. ठीक है, just a minor alteration. Then we come to the next, that is the rescission. What do we understand by rescission? So rescission is can be a revocation, like revoke करना, या फिर cancellation, or repeal of a law, order or agreement. So this is rescission. Then coming to the repudiation, what do we understand by repudiation? So it is nothing but it occurs when one party refuses to honor a contract with another party. So this is the meaning of repudiation here. So coming back to the question, so what is the right answer of this question? What is the right answer of this question? So तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे the right answer of this question is nothing but the alteration, because there are subsequent changes made in the nature of contract, just certain चेंजेस. ऐसा नहीं कि नया कॉन्ट्रैक्ट ले आए या फिर क्या कहते हैं उसे किसी ने मना कर दिया हो उसे क्या कहते हैं ऑनर करने से, या फिर किसी तरीके का भी रिवोकेशन या कैंसिलेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वी कॉल इट अ ऑल्टरेशन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज इफ अ कंपनी enters into a contract beyond the scope of its object, it becomes, अगर कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है या एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, जो उस कंपनी का ऑब्जेक्ट है उसके बियॉन्ड जाकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हम उसको क्या कहेंगे? इज इट इंट्रावायरस, इंफ्रावायरस, अल्ट्रावायरस और अल्टीमोवायरस? तो ये एग्जैक्टली क्या होगा? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अल्ट्रावायरस, बिकॉज द कंपनी इज गोइंग आउट ऑफ इट्स स्कोप. ओके, going out of its scope, so we can say that it is ultra wires. Okay, so this is the right answer of this question. Now coming to the next question, that is question number 6. Which among the following is entitled to be protected through copyright? Copyright के through क्या क्या इसमें से protected
होता है. So is it facts, is it ideas, is it expressions, or is it method of operation? What is protected? क्या चीज यहाँ पे जो हमारी कॉपीराइट के अंदर क्या चीज हमारी ऐसी है जो प्रोटेक्ट होती है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस आर प्रोटेक्टेड अंडर द copyright. Okay, now moving on to the next question, that is question number 7. Question number 7 कहता है that the maximum term of protection for a literary work on an of an individual author under the Copyright Act 1957 is what? So options are 60 years. Second option is lifetime of the author plus 60 years. Then third option is lifetime of the author plus 70 years or 20 years. So what is the right answer in this? The maximum term is nothing but the option number 2, that is lifetime of the author plus 60 years. So life plus 60 years is the right answer here. Now moving on to the next question, that is an invention is protected by either copyright, trademark, industrial design, or patent. So the right answer in this question is the patent. An invention is protected by the patent. We'll also look कि भाई इन चीजों के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो प्रोटेक्ट होती हैं. So अगर हम देखें तो कॉपीराइट के अंदर जैसे वी हैव सीन इन द लास्ट क्वेश्चन, इट इज द nothing but the expression which is protected. Okay, then under when we look at the trademark, then signs are protected, signs which distinguishes the goods or services. ठीक है. Then the industrial design basically it protects the appearance or aesthetic features of a product. तो यहाँ पे ये चीजें प्रोटेक्ट होती हैं. देन पेटेंट डेफिनेटली इट इज नथिंग बट द इन्वेंशंस. सो द राइट आंसर इज पेटेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. So when we look at this question, so it says consider the following statements about the intellectual property and identify the correct statement. यहाँ पे correct statement बतानी है कौन सी है. तो when we look at the first statement, पहली statement कहती है intellectual property refers to the creation of the mind such as inventions, literary and artistic works. Okay, कि भाई जो intellectual property है it basically refers to creation of the mind. ठीक है, जो माइंड क्रिएट करता है सच जिस तरीके जैसे कि इन्वेंशन हो सकती है, कोई लिटरेरी वर्क हो सकता है, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है. सेकेंड ऑप्शन सेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स पेटेंट एंड कॉपीराइट, के भी पेटेंट और कॉपीराइट भी इंक्लूड होते हैं किसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में. द थर्ड वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड ट्रेडमार्क. थर्ड कहता है कि भाई सी जो है हमारा कहता है कि ट्रेडमार्क जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होता है. और डी हमारा जो है वो कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड इंडस्ट्रियल डिजाइन, की भी इंडस्ट्रियल डिजाइन को भी इंक्लूड जो है वो यहाँ पर नहीं करता है. सो नाउ वी विल सी द ऑप्शंस गिवन हियर. लाइक अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें पहले तो भी कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही हो सकते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट इसके अंदर हमारे सही हो सकते हैं. तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो क्या पहला स्टेटमेंट हमारा सही है? तो यस, the intellectual property refers to the creation of mind such as invention, literary and artistic work. Yes, it is right, ये सही है. Then we see the next one, B. पहला सही है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द पेटेंट एंड कॉपीराइट, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही इंक्लूड होते हैं इसमें. देन द सी इज आईपी डज नॉट इंक्लूड ट्रेडमार्क, तो ऐसा नहीं है, डेफिनेटली ट्रेडमार्क इज आल्सो इंक्लूडेड, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. Then intellectual property does not include industrial design. So this is also a wrong statement because it also include the industrial
design. तो ये भी गलत है. तो basically we have two options correct here. Now we will look at the options given under this question. So here we can see directly that fourth option is the right answer because it says A and B only. So this is the right option here. Now coming to the next question, that is under the Citizenship Amendment Act 2019, persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, or Christian community from certain specified countries are not be treated as illegal migrants. Which are those countries? ठीक है. तो यहाँ पे कहता है कि अंडर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारा 2019 में आया, उसके अंदर पर्सन्स बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो थे कुछ और कंट्रीज से, उनको जो है इलीगल माइग्रेंट ट्रीट ना किया जाए, ऐसा कहा गया था. तो वो कौन कौन सी कंट्रीज थी हमारी, दैट वी हैव टू सी हियर. तो यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, दैट इज वर्सेस अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड म्यांमार. तो ये जो है हमें चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और हमारे पास उसके बाद कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि भाई इसमें से कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसको यहाँ पे ऐसा जिनके लिए कहा गया है. तो अगर हम इसको देखें तो वी कैन से दैट वी हैव विच कंट्रीज लाइक yes, Afghanistan was there, Bangladesh was there, Pakistan was there, yes, and Myanmar was not there when it comes to treating those as not treating them as illegal migrants. Then these countries were there. So the right option in this particular question is the third option, that is ABC only. ABC countries, that is Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. So that's it from the today's session. Thank you for joining. You can also register for the free demo classes. The link is given in the description, so you can just go there and fill the form so that you can get a free demo class. And if you have any doubt, you can mail us also on the mail ID given in the description box. Thank you so much for joining. Take care. Bye bye.